Good morning to your students. Welcome back to your SST class once again. Children, in our previous classes, we were learning about Saudi Arabia and we learned about the animals found in Saudi Arabia and about the economic activities people follow there. Okay, now today we are moving forward to look after the people living there and their lifestyle. So children, come to page number 40 and let us start reading people and their lifestyle. The discovery of the oil reserves has changed the lifestyle of the people. Oil reserves were discovered in 1930s. Before this discovery, most of the people were poor, but now their standard of living has improved. All modern facilities are available here. So children, the people there are very rich now because due to discovery of oil reserves. ऑयल रिजर्व्स की वहाँ पे जब डिस्कवरी हुई इन 1930s, उसके बाद से द लाइफ ऑफ द पीपल हैज लिटरली चेंज्ड. ओके, उनकी लाइफ चेंज हो गई. दे हैव बिकम मॉडर्न, दे हैव स्टार्टेड यूजिंग द मॉडर्न फैसिलिटीज. ओके, और उसके पहले वो थोड़े से पुअर थे, बट आफ्टर हैविंग दिस ऑयल रिजर्व्स, डिस्कवरी ऑफ ऑयल रिजर्व्स, दे हैव बिकम वेरी रिच. ओके, एंड दे स्टार्टेड लिविंग अ मॉडर्न लाइफ. So all modern facilities are available here. Towns and cities have developed rapidly. People work as executives, traders and workers. Many schools, colleges, hospitals and offices have come up in Saudi Arabia. So children, with the discovery of oil reserves, just see what are the changes came into the life of the people there. They started enjoying all the modern facilities. All the towns and cities have developed. Towns and cities सब develop हो गए. Then people started working as executives. Traders means बड़े बड़े पोस्ट पे, बड़े बड़े रैंक पे लोग वहाँ पे काम करने लगे. And previously what was there? Only just like farmers. They worked as farmers. But later on, after the discovery of oil reserves, they started working as executives, traders and workers. Now many schools and colleges, hospitals have also been opened in Saudi Arabia. That means वो हमेशा वो improve करने लगे. Okay. Then it has a huge amount of petroleum which is also called liquid gold. So that petroleum is also called the liquid gold. Why it is called the liquid gold? Because it is as precious as gold. गोल्ड के ही जैसे बहुत ही प्रेशियस है वो, और वहाँ पे उसे वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब अपनी कंट्री से बाहर भेजते हैं और बहुत सारे पैसे उससे उन्हें मिलते हैं. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द लिक्विड गोल्ड. Even today, some people prefer traditional living. They move from place to place with their cattle and camels in search of green pastures. So children, beside these modern people, कुछ लोग तो इतने मॉडर्न हो गए हैं, नई टेक्निक्स आ गई हैं, बट अभी भी कुछ लोग जो है ट्रेडिशनल लिविंग जी रहे हैं और they move from place to place with their cattle. And I told you which cattle is famous there. Mostly camel is famous there. Okay, so अपने cattle जो camel है उसके साथ वो जगह जगह पे जाते हैं, जगह जगह मूव करते हैं इन सर्च ऑफ ग्रीन पास्चर्स, मतलब जहाँ पे उपजाऊ जमीन हो, जहाँ पे उन्हें हरियाली मिले अपने कैटल्स को रखने के लिए. ठीक है, सो दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड दे आर नोमैड्स एंड आर कॉल्ड बेडोइंस. उनको हम नोमैड्स बोलते हैं और बेडोइंस उनको बोलते हैं. ठीक है, मतलब आप यू कैन कॉल बंजारे, आप हिंदी में उसे बंजारे भी बोल सकते हैं. They stay in tents made of camel or goat skin. So where do they stay there? उनका कोई permanent house तो होता नहीं. So they stay in tents made of camel and goat skin. They live very hard lives. They move in groups forming long rows of camels called caravans. So वो हमेशा ग्रुप में चलते हैं. ओके, दे ऑलवेज मूव इन अ ग्रुप एंड फॉर्मिंग द लॉन्ग रोज ऑफ कैमल्स, क्योंकि वो अपने कैटल्स के साथ चलते हैं. सो उनके जो कैमल्स हैं वो बिल्कुल लॉन्ग रो में ऐसे लाइन बना के चलते रहेंगे. और व्हाट वी कॉल टू दैट रो, वी कॉल इट एज कैरावान्स. ओके, उसको हम कैरावान्स बोलते हैं. एंड आई हैव शोन यू इन द लाइव क्लासेस ऑल्सो चिल्ड्रन. सो ऑल ऑफ यू जस्ट try to join the live classes, okay, because we discuss lots of things in the live classes, so try to join it. So children, today we will do till here. In our next class we will move towards the clothing of the people of Saudi Arabia. So till we meet in the next class, thank you.